सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वी हैव स्टडीड बेसिक फिज़िक्स, वी हैव टेकन एन इंट्यूटिव फील ऑफ फिज़िक्स। अब द नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, units measurement and dimension. This chapter is like a entry door to the physics. This chapter plan ये है कि we are going to cover this chapter in the next 4 lectures. तो पहला लेक्चर जो होगा हमारा, हम लोग प्लान करेंगे उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिनिश करने का. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस. The third lecture will do error and the propagation of error, and the last lecture, the fourth lecture, will do this vernier caliper and the screw gauge. हम लोग साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, साथ साथ PYQ करते जाएंगे. कोई सेपरेट हम इस चैप्टर के लिए कोई एक सेपरेट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वीडियो या PYQs का कोई एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे, जो कि आगे वाले चैप्टर्स में आई थिंक हमें बनाना पड़ेगा. बस इस चैप्टर के लिए नहीं है. इस चैप्टर में हम लोग साथ के साथ क्वेश्चन करते रहेंगे. इसमें जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं हमारे इन JEE एंड NEET, इट इज़ मोस्टली कम्स फ्रॉम एरर एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर और इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की तरफ से आते हैं. तो हम लोग देखते हैं. विल स्टार्ट द चैप्टर, विल स्टार्ट द लेक्चर. सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1. अब लेक्चर नंबर 1 में हमारा गोल है कि हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर यूनिट्स, वाई मेजरमेंट इज़ लाइक एंट्री टू द फिज़िक्स. इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर द फिज़िक्स measurements, how the measurements has been done, the measurements been done directly or indirectly, directly through the measuring instruments that we are having, and indirectly if you have to measure the distance of sun, you don't have a direct method to measure it, so there are certain indirect methods to measure it, which we are going to cover. जो कि indirect methods हैं हमारे parallax हो गया एक. Then we have the echo method, जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए है. फिर एक हमारे शॉर्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी वी हैव अ कंसेप्ट हेयर, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. एंड विल सी द साइज ऑफ फोलिक एसिड. उसमें क्या एक कंसेप्ट लगेगा टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंसेस इनडायरेक्ट थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड. तो इतना हमारा प्लान है इस लेक्चर नंबर 1 में कवर करने का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में. सो स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले विल सी दिस इज़ अ रॉड. सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस रॉड इफ़ आई आस्क यू? रॉड को देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि सम पीपल विल से इट्स अ स्मॉल रॉड, सम पीपल विल से इट्स अ लॉन्ग रॉड. अनदर थिंग जो आपके दिमाग में आएगी, इट्स अ हैवी रॉड और लाइट रॉड. देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ रॉड, किस मटेरियल से बनी हुई है रॉड. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी द रॉड फर्स्ट हैंड. But these are all the subjective answers that you're going to give. Seeing this rod, there is no clear or the universal answer that you're going to give after seeing this rod. Okay. So, but ये जो जितनी चीज़ें आपने बोली हैं कि ये rod long है, short है, heavy है, light है, can you measure all of them? Is it possible to measure all of them? Can you measure this? How long is the rod? Can you measure how short is the rod? Can you measure what is the weight of this? Is it heavy? Is it light? So it's measurable. Can you measure if this rod falls on your leg? Can you measure the pain that you are having? No, you cannot measure that pain. That cannot be quantified. You can say कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, but you cannot quantify it in numeric manner. So, but these things, long, short, heavy, light, color, and made, you can quantify all those things. So now the next differentiation happen is whether you can measure all those things. पहली differentiation आई कि सब ने different answer दिए, कोई universal answer नहीं आया. ठीक है. Second हमारा question उठा कि whether we can measure those things or we can not measure those things. ये चीज़ हम लोग measure कर सकते हैं, but
if the rod falls on your leg, you cannot measure the pain. ठीक है? So there are certain measurable things and there are certain non-measurable things. जो भी measurable things होती है वहाँ से physics शुरू होती है. अगर measurement है उस चीज़ में, वहाँ से you can do the physics, because physics is a fundamental and most precise and the accurate science. ठीक है? हमारे को जो हमारे अराउंड पे नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उसकी अगर हमारे को एक्यूरेट नॉलेज है चाहिए, to get that accurate knowledge, physics में क्या होता है ना, we have the relationship between, suppose we have the relationship between, so suppose A is equal to A x plus y plus z. So this is a relationship, general relationship in the natural phenomena. To know the A, we have to know the x, y, z. To quantify the A, we have to know x क्या है, y क्या है, z क्या है, इनके measurements क्या हैं, अगर मेरे को A के फिनोमेना को क्वांटिफाई करना है. दैट्स वाई जहाँ से जो चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं, अगर हम लोग मेजर कर सकते हैं तो वहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट कर जाती है. जहाँ जो चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, दैट कम्स इन द फिलॉसफी डोमेन, दैट इज़ नॉट अ फिजिक्स डोमेन. आप मेजर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? डिस्टेंस यू कैन मेजर, बट कैन यू मेजर द डायरेक्शन ऑफ लाइफ? यू कैन नॉट मेजर द डायरेक्शन ऑफ लाइफ. यू कैन मेजर द फोर्स, कैन यू मेजर द मोटिवेशन? नो. यू कैन मेजर द एनर्जी, कैन यू मेजर द इंस्पिरेशन? नो. So whatever the quantities which you can measure will comes under the scope of physics, and the quantities which you cannot measure, which comes under the scope of philosophy, which can't be quantified. So now next question is कि anything which हमारे को फिजिकल रिलेशन, हमारे को एक फिज़िक्स के नेचुरल फिनोमेना को जानने के लिए फिजिकल रिलेशन चाहिए. फिजिकल रिलेशन के इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल factors, like A depends on X, Y and Z. These are all the quantities on which it is depends. So अगर ये measurable quantities हैं, so we call them a physical quantity. All the quantities which are measurable, we call them as a physical quantity. And these are the building blocks of physics, measurable quantities. They take you from the vague to measurable things. If you measure something, it will take you like long and short क्या है? It's a vague thing. Heavy and light क्या है? It's a vague thing. It's all subjective thing. But when you say it is 5 meter long, when you say it is 10 kg, so you are taking something vague to measurable. So that's what we got to do with the physical quantity. So it's help you whenever you have the quantification of natural phenomena, when you have the relationship and you put the numbers in that, so you can predict and control the real world, and you know what is happening in the real world, right? So now physical quantity is clear to you. Anything which can be measured is a physical quantity. now you ask 3 people about the rod. Okay, can you tell me what is the length of the rod? So हमारे A भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि it is 5 of my arm's length. ठीक है, मेरे हाथ के लेंथ का 5 टाइम्स है ये. B आए, उनका हाथ थोड़ा लंबा है, उन्होंने बोला this is 10 of my arm's length. C आए, उन्होंने बोला this is 8 of my arm's length. Again, who is right, who is wrong? Again, this is not universal. This is going to create a communication problem. So this is also not universal. Okay, so we need to define something which is universal, which can be taken across the borders, because हमारे physics is not about located to one place. Physics is a phenomena which is going over the globe या universe. तो जो observation हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, that observation can be taken by the person in different country. तो वहाँ पे अगर वो different units use करेगा, यहाँ पे हम लोग different units करेंगे, that will create a problem. So that's why we need something कि जो एक universal thing हो. तो उस यूनिवर्सल थिंग जो कि यूनिवर्सल थिंग हो, सो यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड करना है ताकि हमारे कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड रहे. सो फॉर दैट द नेक्स्ट थिंग्स कम्स कि वी हैव टू सेट सर्टेन यूनिट्स सो दैट वी कैन डिफाइन इट मोर क्लियरली. सो नाउ वी से ओके इट्स यूनिट इज मीटर. सो नाउ वी कैन डिफाइन, नाउ द रॉड इज 2 मीटर. सो नाउ वी हैव रीच फ्रॉम द सब्जेक्टिव एंड द ब्रॉडर picture to a more quantified and a limited way. So from here long to short we have gone down to 2 meter. So we have narrowed down to a specified rather than the universal manner. We have come to the
we have come to the conclusive narrowed manner कि okay, it is 2 meter, it is not different things as per the observer, it is just 2 meter only, it will not change as per the observer. Okay. So now the question is, what is this 2 meter? What is this 2 meter? Meter, now you know it is a unit of length, but if you don't know it's a unit of length, what is this 2 meter? तो जो नेक्स्ट चीज़ बताता है कि 2 मीटर क्या है, दैट इज़ द डायमेंशन. 2 kg क्या है, दैट इज़ अ मास. सो वो जो बताता है हमारे को कि ओके 2 मीटर डायमेंशन बताएगा, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है. मास इफ़ 2 kg है, ये 2 मीटर है, क्या है ये, लेंथ है, मास है, टाइम है. सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे को डायमेंशन चाहिए होती है. ओके 2 मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. Like for instance, you say unit is 5 apples. Okay, आपको पता लग गया एप्पल एक यूनिट है. Now 5 is the numeric quantity, 5 apples you have got a physical quantity, but who will tell कि that apples is fruit? It is the dimension who is going to tell that apple is a fruit, not vegetable. Okay, same way here the 2 meter, it is length, mass or time, it is going to be tell by the dimension. So that's how our units and dimensions are related. And that's how the measuring is one of the most important, like a key door, one of the most important entry to the physics. It's a measurement. I hope this page is clear. I'll move to the next one. Now we'll briefly discuss a bit more about the measurement, because as I've told you, measurement starts, physics starts. Okay. If you can't measure, you can't do the physics, because physics is a quantified and a verified science. It gives you precise and the accurate knowledge. ठीक है, ये कोई वेग टर्म्स में नहीं चलती है फिजिक्स. तो जो भी नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, उसको एक प्रिसाइज मैनर में, एक्यूरेट मैनर में प्रेजेंट करती है फिजिक्स. और किसी भी चीज़ को एक्यूरेट मैनर में प्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप में मुझे चाहिए जितने भी उसके रिलेशनशिप में फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे को उसका मेजरमेंट चाहिए. ठीक है. सो हियर द सेम थिंग इज बीन रिटन. फिजिक्स इज अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट साइंस. देयरफॉर ऑल द नेचुरल फिनोमेना इज बीन एक्सप्रेस्ड इन सम रिलेशन. ठीक है, expressed in some mathematical relation, and that relation is having certain physical quantities, like for instance F is equals to ma. It's a force relation with acceleration and mass. So here if you wanted to know F, you need to know the value of m and a. Okay, so all can be measured. If you measure m and a, suppose you have a car and you have a big bus. Okay, now you applied a force on this and you applied a force on this, and you calculate acceleration on this and you calculate acceleration on this. Okay, so now same force you applied and acceleration you don't know, but you say कि okay this is a small thing, so इसकी acceleration ज़्यादा होगी, this is a big thing, इसकी acceleration small होगी. ठीक है, एक ये आइडिया आपको लग जाएगा, स्मॉल और बिग, सीइंग द मास. बट टू गेट इट मोर एक्यूरेट आंसर कि वो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द फिजिकल रिलेशन. एंड व्हेन यू मेजर द क्वांटिटी, बिकॉज यू मेजर द मास ऑफ दैट, देखने से तो पता लग रहा है कार इज स्मॉल, बस इज बिग, बट when you measure the mass of it, you get the accurate value of the acceleration. Once you get the accurate value of acceleration, you will get to know कि अभी वो t सेकेंड पे यहाँ पे है और t + 5 सेकेंड पे वो कहाँ पे होगी. that kind of a determinacy you will get it once you get more and more accurate information, right? So this is clear up to here. So now accuracy is here. So accuracy of F depends on how accurately you measure the value of F and M and A. Therefore measurement is fundamental to make the physics precise. Okay, and the measurement is depending on two things. It depends on the instrument that you are using and the techniques you are using. Okay, so instruments and techniques, it is a dynamic thing. जितना आप डेवलपमेंट में प्रोसेस करते, जितना आप डेवलपमेंट में एक्सेलरेट करते जाएंगे, उतने ही यू हैव द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उतना आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी. जितनी आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी, देन फर्दर यू इंप्रूव योर टेक्नोलॉजी एंड यू मेक मोर सोफिस्टिकेटेड इंप्रूवमेंट्स. इट इज़ लाइक अगेन द सेम डेवलपमेंटल लैडर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट, कि आपकी
फिज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप उतना अच्छा मेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसके थ्रू फिज़िक्स करेंगे. फिर यू गो टू द नेक्स्ट लेटर. यहाँ पे आपकी साइंस और बेटर इंप्रूव होगी. यू मेक बेटर इंस्ट्रूमेंट टू मेक बेटर साइंस, बेटर फिजिक्स. फिर उस बेटर फिजिक्स से यू मेक बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंस्ट्रूमेंट. सो दैट्स हाउ you keep on improving in terms of instruments also and techniques also. If you see in the past what kind of instrument we are using, and if you see now how sophisticated instruments we are using to measure, और जितना instrument sophisticated होता जाएगा, जितना हम लोग जितना हमारे एक्यूरेसी आती जाएगी, प्रिसीशन आता जाएगा हमारे मेजरमेंट्स में, जो कि हम लोग आगे देखेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है. जितना हमारे एक्यूरेसी और प्रिसीजन आता रहेगा उतना ही हमारे साइंस और ज़्यादा रियलिटी के करीब आती रहेगी. राइट. Measurements, we have seen how much it is important for physics. It is like a entry door for physics. Next we move to the physical quantity. So physical quantity क्या है, कितने तरीके की physical quantity है, ये हम लोग अब देखेंगे. So physical quantity basically चार तरीके से हम लोग define करेंगे. One is fundamental physical quantity, one is derived physical quantity, third is we can say scalar, and the last one is vector. So scalar and vector we are going to cover in the chapter when we are going to see the vector. So for the scope of this lecture or this unit and dimension, we'll cover up only fundamental and the derived physical quantity. तो fundamental physical quantity जो है हमारी, we'll see it. So fundamental physical quantity means it is independent. ठीक है, इसको further break down नहीं किया जा सकता. For instance, ये small blocks हैं, इन 2 ब्लॉक से बना के आप एक बड़ा ब्लॉक बना लो. ठीक है, इन 3 से बना के और एक और कुछ बना लो, ये 4 से मिला के बना लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बना लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से. बट अगर इससे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट इनके कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक डिफरेंट थिंग्स. सो दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल, कि इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, बट इनके थ्रू यू कैन डिराइव एनी अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. सो फिज़िक्स में जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए आई जस्ट नीड 7 डिफरेंट यूनिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच वी कॉल फंडामेंटल. सो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आई कुड एबल टू डिफाइन ऑल द डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन फिज़िक्स. यहाँ पे मेरी कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी हैं? 7 जो मेरी फिज़िकल क्वांटिटी है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ मास, सेकेंड इज़ लेंथ, थर्ड इज़ टाइम, फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिक करंट, fifth is temperature, sixth is luminous intensity, and seventh is amount of substance. These are the 7 quantities with which आगे जितने भी हम लोग पूरे फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो इन्हीं से ही ये these are the fundamental in them. तो इन्हीं से ही those physical quantities we can derive, right? Like for instance, if you take it force is equals to m into a. ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल हो गई मास. अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा? लेंथ ओवर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. सो वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ ओवर टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो this. So I have reached up to the fundamental level. So length is also my fundamental physical quantity, time is also my fundamental physical quantity. So I have reached up to the level of fundamental. Okay, so every physical quantity, force also, acceleration also, or any other physical quantity can be derived from these 7 fundamental quantities, right? So next is derived quantities. Again the same way, force is equal to mass into a. Mass is my fundamental and acceleration is my derived. Acceleration can be further break down into fundamental, velocity over time, and velocity we further break it down to the length over time. So now this is my fundamental. I have broken it down to the most fundamental quantities, right? So these are the fundamental quantities. Why we are studying fundamental quantity? Because physics में natural phenomena का हमारे इसको study करना है, और natural phenomena डिपेंड करता है फिजिकल मैथमेटिकल रिलेशंस पे बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, और मेजर करके वी हैव टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दैट नेचुरल फिनोमेना, ताकि हम डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के उसके एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें. सो इस चीज़ के लिए हमारे को फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? नेक्स्ट इज Next is how we measure.
हमने देख लिया मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है. सो हाउ वी मेजर थ्रू सम स्टैंडर्ड अमाउंट. ओके, सो सपोज ये रॉड है. हाउ डू वी मेजर दिस रॉड? हमने देखा था कि इफ़ यू डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड अमाउंट, तो हर कोई अपने तरीके से उसकी मेजरमेंट लेके आ जाएगा. कोई कहेगा कि इसे 5 मीटर है, कोई कहेगा ये 2 है, कोई कहेगा ये 10 है. तो वी डोंट नीड अ वेग आंसर, वी नीड अ यूनिवर्सल एंड अ सिंगल आंसर. वी डोंट नीड मल्टीपल आंसर्स. ठीक है, वी डोंट नीड अ सब्जेक्टिव आंसर फ्रॉम different people. So we just need one answer. So for that we need to compare it with some standard amount, okay, which we call it as a unit. Now suppose this rod is there. Okay, now in rod this is my standard unit. Okay, I take it as x as a standard unit. So now this rod is 3 times of x. Okay, this length of the rod. I have another system of units where this is my basic unit in terms of length. So now this length is 1 times of y. Have you got the relation here? So the length of physical quantity is numeric value और उसकी जो यूनिट है. ठीक है, लेंथ जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और जो यूनिट से हम कर रहे हैं, जो यूनिट है. नाउ वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन के जैसे जैसे यूनिट छोटी होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ती रहती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होती रहती है. बट फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं कहूँ 5 मीटर है, ठीक है, अगर यूनिट मेरी सपोज 1 मीटर है तो दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू 5 आ जाएगी. ठीक है, अगर मैं करूँ मेरी यूनिट 5 मीटर है तो यहाँ पे मेरी न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि एक ही बार में वो मेजर कर देगा. सेम लाइक दिस एग्जांपल. ओके, सो क्वांटिटी, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट. यूनिट इज द बेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, कि कितने टाइम्स मैं उस यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. हेयर यहाँ पे देखूंगा मैं एक टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी लेंथ निकल आएगी. यहाँ पे मेरे को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तभी मेरी लेंथ आ रही है. सो दैट वैल्यू इज 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट क्वांटिटी. So that's how, but in both the units my length is this only, na, length is 3x, or but so we can equate 3x is equals to 1y is equals to L. This is what we have done here. Okay, so this concludes कि अगर आपकी यूनिट बड़ी होगी, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू छोटी चाहिए होगी, एंड अगर आपकी यूनिट छोटी होगी तो आपको बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी. तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, ठीक है, सारे फंडामेंटल जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनकी एक स्टैंडर्ड यूनिट है. बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट समटाइम्स द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज़ डिफरेंट. अगर मेरे को अर्थ से सन का डिस्टेंस लेना है या मेरे को अर्थ से स्टार का डिस्टेंस लेना है, आई कैन नॉट मेजर इट इन मीटर्स. ये तो एक बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा उसमें. तो प्रैक्टिकली जब मैं कैलकुलेशन करने जाऊँगा तो दैट विल क्रिएट अ बहुत बड़ा, मेरे को एक एफर्ट्स लगेंगे उसको कैलकुलेट करने में. तो उस प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से आई चेंज द यूनिट टू लाइट ईयर्स, और विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. वी चेंज द यूनिट इनटू लाइट ईयर्स. राइट, यहाँ तक क्लियर है. Any physical quantity can be expressed into n into u, where u is the standard and is the numeric times of that unit that I have to do multiply to get that length. Now we'll go a bit further into the units. So units हम लोग ऐसे यूनिट्स तो ऐसे किसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते. कुछ एक उसके बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए, बेसिक एडेप्टेशन, उसके एडप्शन के कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी तो हम लोग एक यूनिट को एक्सेप्ट करें. तो वो क्राइटेरिया जो हमारे फीचर्स हैं वो है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट बी वेग. ओके, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज. ऐसा नहीं है बहुत छोटी यूनिट हो जाए या बहुत बड़ी यूनिट हो जाए, ऐसा नहीं. इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, तो कि मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को केटर कर ले, इतनी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ को केटर करने के लिए आपने यूनिट बड़ी कर दी. ये देखो कि अगर आपके पास 100 यूनिट है तो वो 70 से 80 यूनिट्स को केटर कर रही है. ठीक है, वो इतना साइज़ आपके 70 से 80 यूनिट्स को केटर कर रहा है. तो इतनी तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी केटर हो रही है. तो इसलिए यूनिट हमारी एक कन्वीनियंट साइज़ की होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी. देन इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज जो फिज़िक्स है इट इज़ नॉट लाइक टाइम लिमिटेड प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हमने देखा था बेसिक फिजिक्स में, इट स्टार्टेड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, देन चेंजेस, देन मॉडर्न टाइम. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो इफ़ द यूनिट्स गॉट चेंज विद द टाइम, सपोज 100 साल पहले हमने जो यूनिट
50 ईयर्स पहले हमने जो यूनिट्स डिसाइड करी थी, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एक टाइम पीरियड में, बिकॉज वी डू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट इन दैट टाइम पीरियड, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारे पास, एक ऑब्जर्वेशन में एक यूनिट में आ रहा है, दूसरी ऑब्जर्वेशन में दूसरी यूनिट में आ रहा है, एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स इन वाइल गेटिंग द फाइनल आंसर, वाइल गेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स. ओके, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन आवर कंक्लूजन. सो इसलिए द यूनिट्स हैं दैट शुड नॉट चेंज विद टाइम. देन वी हैव इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड इम्पेरिशेबल. ठीक है, इट कैन बी रिप्रोड्यूस के ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में बस हो गई और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज कैन नॉट हैव दिस. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट कैन बी रिप्रोड्यूस एनीवेयर एंड इट शुड बी इम्पेरिशेबल. ऐसा नहीं है वो ख़राब हो जाए. और इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेंथ की कोई यूनिट आपने डिफाइन करी है वो बढ़ जाए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसका कोई फिजिकल मटेरियल ले रखा है आपने, वो चेंज हो जाए. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. प्रेशर है, प्रेशर की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए. एंड इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इट इज़ नॉट कि कुछ कंट्रीज़ ने कुछ यूनिट एक्सेप्ट कर रखी है, कुछ कंट्रीज़ ने कुछ यूनिट एक्सेप्ट कर रखी हैं. एंड आपको पता है स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, दैट इज़ लाइक अ इंटर कंट्री इंटर कॉन्टिनेंट रिलेशनशिप होती है इसमें टू सेट अक्रॉस सच अ बिग मिशन एंड ऑल. तो उसके लिए हमारे को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम चाहिए. ठीक है, so system of units देखते हैं अब हम. next in units is we were earlier having three system of units: CGS, FPS and MKS. CGS is centimeter, gram, second. Okay, these were, and then foot, pound in second. MKS is meter, kilogram in second. and in this हमारे पास केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती थी, जिसमें लेंथ, मास एंड टाइम. फिर उसके बाद हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी. उसके बाद हमने, बिकॉज इन तीनों से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन नहीं कर सकते थे. ठीक है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं डिफाइन कर सकते, आप करंट नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, आप इससे इन केवल 3 से नहीं डिफाइन कर सकते. तो हमारे को एक नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए था जो कि फंडामेंटल सारी यूनिट्स को कवर, फंडामेंटल हमारे सारी यूनिट्स को कवर कर ले, ताकि जिसके थ्रू हम सारी और फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर पाएँ. ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड किया टू हैव अ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसमें हमारे 7 बेसिक यूनिट्स होंगी और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है. 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी है हमारी, जो कि हम ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में देख चुके हैं. दैट इज़ टू केटर लेंथ, मास, जो लेंथ की जो यूनिट है हमारी मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, and quantity of matter की mole. So these are the 7 units from which we define all the fundamental quantities. Apart from this, we were having 2 supplementary quantities to define the angles and all. So one is plane angle. It is defined in radian 2D. So if you have a circle, जो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस, इनके बीच में जो एंगल ये बन रहा है, दैट इज़ थीटा, विच इज़ कॉल्ड अ प्लेन एंगल 2D के अंदर. तो इसकी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल्स टू L over R. This is length of arc, length of this arc and this radius. Second is my solid angle, which is we call as radian. This is radian. It is in 3D. So imagine watermelon. So if you cut a piece of watermelon like in a conical manner, so जो इसका ये वाला एरिया कवर अप होगा, ये वाला जो एक कोन टाइप से जो एंगल बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेरेडियन एंगल. सो इसके हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस एरिया, जो ये वाला सरफेस एरिया है, एंड डिवाइडेड बाय जो रेडियस है इसका, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर. राइट, यहाँ पे सरफेस एरिया इट कैन बी दिस वन, तो इसका जो रेडियस ऐसे होगा. सो यहाँ वाला, अगर हम ये वाला सरफेस एरिया लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला सरफेस एरिया लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर, हेयर वी हैव स्टडीड. मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, सॉरी. एंड देन वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई उसमें, देन वी हैव गॉन टू SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे CGS यूनिट्स, MKS यूनिट एंड SI यूनिट्स, दैट इज़ डिफाइंड थ्रू डेसिमल, एंड डेसिमल मेट्रिक है
FPS जो यूनिट है वो नॉन मेट्रिक है. डेसिमल मेट्रिक मीन्स कि अगर मेरे को यूनिट्स के बीच में चेंज करना है, दैट इज़ डन थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10. सपोज फॉर इंस्टेंस 1 मीटर से 1 मिलीमीटर चेंज करना है मैंने, ठीक है. 1 मीटर से 1 मिलीमीटर, इट इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर. ओके. अगर मेरे को 1 किलोमीटर से मीटर को चेंज करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. सो इट इज़ इन द मल्टीपल ऑफ 3. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ metric, decimal metric. Okay, so next we'll move on to why we have adopted SI system of units. What are the advantages of SI system of units, right? So SI system of units, first thing is coherent, because all derived units can we get from the fundamental, this 7 fundamental basic units. इनके 7 यूनिट्स के बेसिस पे वी कैन डिफाइन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज. ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स ऑल्सो कैन बी डिफाइंड विद दिस 7 यूनिट्स, विद द 7 बेसिक यूनिट्स, जो कि MKS, CGS एंड FPS में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बस 3 फंडामेंटल यूनिट्स थे, लेंथ, मास एंड टाइम. ठीक है. तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, मैग्नेटिक्स में है, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ वी कुड नॉट एबल टू डिफाइन. जो हमारे ऑप्टिक्स में है, दैट ऑल्सो वी कुड नॉट एबल टू डिफाइन. ठीक है. तो हमारे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में काइनेटिक लेवल पे जो हैं वो हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते. सो फॉर टू केटर ऑल दोज प्रॉब्लम्स we have got a SI system of units that is coherent, because we could able to derive all the physical quantities units with this 7 basic set of units. Second, it's SI system of units. Second is SI system of units. It's rational. Rational means कि पहले इसमें सारी जो एनर्जी की यूनिट है दैट वी कॉल इट एज जूल ओनली. पहले क्या होता था ना, MKS में मैकेनिकल एनर्जी को बोलते थे जूल, हीट एनर्जी को बोलते थे कैलोरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते थे वाटर. सो अगेन 3 यूनिट्स फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी, तो एक कन्फ्यूजन होता था. बट SI यूनिट्स में वी हैव ओनली 1 physical quantity, that is called joule. And then again lastly it got internationally accepted, so that's why in our current thing we have got SI system of units, जो कि ये हैं हमारी इस टाइम पे. These are my SI system of units. So earlier जो old books में है उसमें ये किलोग्राम की different system of unit है, but right now this got changed, and earlier it was linked to some physical material. So now each and every unit has got linked to some fundamental constant, so जो कि चेंज नहीं हो सकता. So each and every one is now linked with fundamental constant. पहले जो था किलोग्राम was not linked with fundamental constant, it was linked with some platinum iridium material था कुछ, उसके बेसिस पे हम लोग मास को डिफाइन करते थे, जो कि अब चेंज हो गया. Now it has been defined with a Planck's constant. So mass now it has been defined as under root of hc by g. This is also constant, this is also constant, and this is also constant. Same way, if you have to define the meter, we define it through the speed of light. So this is the definition. Speed of light, how we define the meter. This is the Boltzmann constant to define Kelvin temperature. This is the Avogadro constant to define. These are all the constant, universal constant, which is not change, which is not at all change. So that's why we have got a coherent system of units with this. We have got second also, it's been defined with the atomic transition frequency of cesium. Then we have this is also universal constant. Then we have the ampere, which has been defined through E, minimum electric charge. Then we have the candela, that has been defined to the monochromatic luminous efficacy of luminous light. So basic thing is कि किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हुई है, एंड द रेस्ट ऑफ बाकी सबकी डेफिनेशन वही है, सेम डेफिनेशन जो इट्स बीन फॉलोड. और नाउ किलोग्राम को बस एक प्लैंक्स कांस्टेंट से लिंक कर दिया है, जो कि पहले नहीं था. पहले एक फिजिकल क्वांटिटी से लिंक था, विच इज़ प्लैटिनम इरेडियम, फिजिकल मटेरियल से लिंक था, जो कि अब चेंज हो गया है. राइट. सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स केटर ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटीज़. बट कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं या कुछ एक चीज़ें हमें मेजर करनी होती हैं, दैट इज़ ऑन अ स्केल लेवल, या तो बहुत छोटी होंगी या बहुत बड़ी होंगी. ठीक है. 80-90% हम लोग इन यूनिट से, मीटर वाली यूनिट से
कर लेंगे, या किलोग्राम वाली यूनिट से कर लेंगे, या सेकंड वाली यूनिट से कर लेंगे, बट कुछ एक होंगी कि बहुत ही माइन्यूट लेवल के टाइम पे होंगी, या माइन्यूट डिस्टेंसेस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस भी होंगी, या बहुत लार्ज डिस्टेंसेस में होंगी। तो प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में हमारे को यूज़ करने पड़ते हैं वो वैल्यूज़। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस ओनली वी हैव गॉट टू डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स. Now we'll see those practical different set of units. So practical units we have for small distances and large distances. For the small distances we have been using Fermi, which is value of 10 to the power minus 15 meter. The nuclear distances हम लोग we measure at a Fermi level. हमने देखा था strong nuclear forces में we have seen कि it works at a 1 Fermi level. So we use it at a Fermi level, not as a meter level, 10 to the power. Then the angstrom we see, most of the wavelength has been defined in the angstrom, 10 to the power minus 10. Same as the nanoscale 10 to the power minus 9. Most of the wavelength has been either defined in angstrom or in the nanoscale. Next we'll see the large distances. Large distances, we see it when we have to measure the distance of sun, distance of moon from the earth, distance between the stars, distance from earth and stars. So in that cases because if we go and start measuring in meter, it will be 10 to the power something. So that we'll see here 10 to the power 15, 10 to the power 11. So it is on a higher side. So again, for the practical purposes, for the calculation purposes, we use some practical units. So for the large distance, the first practical unit we are having the light year. So what is light year? कि एक साल में जो लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस, दैट वी कॉल इट एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस लाइट ईयर. सो एक साल में कितना एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी, दैट वी विल डू इट सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लाइट की स्पीड इंटू टाइम ऑफ 1 ईयर. we'll do it 365 into 30 into 60 into 60. So we got this value, 1 light year is equals to 9.467 into 10 to the power 15 meter. Okay, this is 1 light year. Then the second large unit distances we use is 1 astronomical unit. Astronomical unit is the distance between the earth and the sun, and the 1 astronomical unit, the value is 1.496 into 10 to the power 11. That's the value. The third large distances is 1 parsec. 1 parsec, and how we calculate the parsec, first we'll see, suppose this is my sun and this is my earth. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 AU. So दिस डिस्टेंस, जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जहाँ से जो सन और अर्थ के बीच का जो एंगल है वो 1 सेकेंड बनेगा. अब 1 सेकेंड क्या होता है, देखो 1 सेकेंड क्या होता है, हमारे पास पाई में 180 डिग्रीज होते हैं. ठीक है, 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई बाय 180. 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड. ओके, सो 1 सेकेंड में, सो विल डू दिस कैलकुलेशन. पाई इज 180 डिग्री, 1 डिग्री में पाई बाय 180. 1 मिनट में मेरे पास 1 मिनट में 1 डिग्री में आई हैव 60 मिनट्स, 1 डिग्री में आई हैव 60 मिनट्स. सो 1 मिनट में आई हैव पाई बाय 180 इंटू 1/60, और 1 सेकेंड में आई हैव इन 1 मिनट आई हैव 60 सेकेंड. 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 minute is equals to 60 second. So we apply this formulation. 1 second में कितना एंगल हो गया, पाई बाय 180. ठीक है, 1 डिग्री इंटू 1 इंटू मिनट. So this is the value. This is the value that we have got it for 1 second. So after doing this, so this is my 1 सेकेंड के एंगल पे जो डिस्टेंस मेरा आ रहा है सन और अर्थ के बीच में, दैट इज़ 1 AU. राइट, नाउ वी डू द कैलकुलेशन फॉर दिस. थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज माई आर्क ओवर रेडियस. थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर, आर्क ओवर रेडियस. आर्क मेरा कितना है, 1 AU, एंड रेडियस क्या है, दिस वी कॉल इट अ पार्सेक. सो 1 पार्सेक विल कम to the value 1 AU divided by this 1 second. So once we do it, we got the value 1 parsec is equal to 3.26 light years. So now if we see, if we relate all three of them, 1 parsec is greater than 1 light year, and 1 light year is greater than 1 astronomical unit. Right? Is this clear?
ये एक बार और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। सो 1 डिग्री में होते हैं मेरे 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 डिग्री में मेरे हो गए पाई बाई 180, ठीक है, एंड इंटू 1/60, क्योंकि 1 के पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 डिग्री में मेरे पास आ गया पाई बाय 180, ठीक है। नाउ 1 डिग्री में मेरे पास 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में मेरे पास कितने आ गए, 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री, ओके। एंड 1 मिनट में मेरे पास 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में मेरे पास 1 डिवाइड बाय 60 मिनट्स आ गए, राइट। सो 1 सेकेंड में मेरे पास तो माई वैल्यू विल बी 1 बाई पाई बाई 180, 1/60 into 1/60, दैट वैल्यू इज 1 सेकेंड। Got it? Even if still you have the confusion, just remember this thing. 1 डिग्री में 60 सेकेंड होते हैं, 1 सेकेंड में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हो गया, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये कन्वर्जन है, यू कैन डू द कन्वर्जन एंड गेट दिस, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Now we'll see the practical units of masses, time and pressure. After this we'll calculate how we'll do the measurement of length and through the direct method and through the indirect methods. So first we'll see the practical units of masses. So practical unit of masses, we are having pound. Pound is 0.4536 kgs. Then another practical unit for the large masses, we have 1 Chandrasekhar unit, Chandrasekhar limit, which is called 1.4 times mass of sun. Then for the small masses like proton, neutron, electron, we uses 1 AMU. 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs. Okay. And then we have for the time, we mostly use year, or we mostly use 98% of the things has been solved with the seconds only, but some of the places we use is 1 solar year is 365.26 days, 1 lunar month also we are having sidereal and synodic is जो हमारे वो पूर्णिमा अमावस्या वाले जो होते हैं, न्यू मून टू न्यू मून वाली साइकिल है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल synodic, जो कि हमारी 29.3 डेज़ की होती है. एंड द अनदर वन इज़ sidereal which is 27.3 days. sidereal का मतलब है कि the revolution of moon around the earth with respect to some stars, not with respect to earth, with respect to some stars. Then there is another unit of time is shake, that is 10 to the power minus 8 second. It is the smallest unit which has been used in the nuclear physics between the nuclear reaction. तो इसका जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, इट वॉज यूज इन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो ओपेनहाइमर मूवी में भी आपने देखा होगा. इट वॉज फर्स्ट यूज इन दैट टू बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस के बिटवीन टाइम बहुत मिनिमल होता है, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट इन सेकेंड. सो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी यूज इट एट 1 शेक. Okay, 10 to the power minus 8 second. Then we move to the pressure. Pressure is we use this 1 bar, which is 1 atmospheric pressure. This is 10 to the power. Pressure is what के कितना फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे, कितना फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि सपोज ये एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसके ऊपर जो भी मेरी एयर है वो कितना यहाँ पे फोर्स लगा रही है इस एरिया पे, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रेशर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एटॉमिक प्रेशर, एंड दैट इज़ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है. सो सपोज ये मेरा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, इसके ऊपर ये सपोज एयर है, ये एयर कितना प्रेशर लगाती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल 1 एटॉमिक प्रेशर. 1 बार 76 mm ऑफ Hg. 1 बार का मतलब है कि if I apply a pressure of 1 bar, तो Hg जो है, जो मरकरी है, that raises by 760 meter. If I apply a pressure of 1 bar, if I apply a pressure of 1 atmospheric pressure, suppose ये
ऐसे इसमें मेरा मर्क्यूरी डाल के रखा हुआ है मैंने, सपोज़ यहाँ पे मर्क्यूरी डला हुआ है यहाँ पे, एंड सपोज़ ये एक ट्यूब है, इसके अंदर मर्क्यूरी डला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाऊँ तो इसमें जो वाटर इसमें जो मर्क्यूरी रेज होना चाहिए दैट इज़ 760 mmHg। अगर इतना mmHg रेज हो रहा है दैट मीन्स वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 bar। एंड वाई वी आर यूजिंग Hg, अगर बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कम राइज हो रहा है। अगर इसकी जगह आप वाटर कॉलम ले लो रादर देन मर्क्यूरी कॉलम, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इट विल, इंस्टेड ऑफ राइजिंग टू 760, इट विल राइज टू वाटर 10.3 मीटर, इतनी हाइट पे राइज कर जाएगा। तो इतने इंस्ट्रूमेंट डिफ़िकल्ट होते हैं बनाने, सो दैट्स वाई वी यूज़ मर्क्यूरी के प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दैट विल राइज वेरी स्मॉल अमाउंट, मेजरेबल अमाउंट है, इतना भी स्मॉल नहीं है, बट ठीक ठाक अमाउंट है, राइट। Then another important topic is order of magnitude. Order of magnitude is कि सपोज़ आपके पास एक वैल्यू दे रखी है, सपोज़ दिस वैल्यू, आपको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है 8 का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि वी कन्वर्ट इट इनटू दिस फर्स्ट, एंड जो ये x की वैल्यू होती है दैट वी कॉल अ ऑर्डर ऑफ यूनिट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट शुड लाई बिटवीन 0.5 to 5। सो नाउ विल सी 8 इज लाइंग बिटवीन दिस, नो, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू दिस, बिटवीन दिस फर्स्ट। कैसे करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 0.8 हो गया, 0.8 हो गया के बीच में लाई इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -1। सेम वे इफ़ वी सी दिस 0.99 इसके बीच में लाई कर रहा है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10⁻0 मीन्स 0। सेम वे हेयर देखेंगे, यहाँ पे 0.135, वेदर इट इज़ लाइंग बिटवीन 0.5 to 5, नो, वी डू 1.3 इंटू 10⁻1, oh sorry 1.3 into 10⁻⁻1। Sorry, here we'll do 8 point into 10⁻1, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा, यहाँ पे 0.135 इंटू 10⁻1, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1.35 इंटू 10⁻1, ठीक है। Now 1.35 lies between this, so now my order of magnitude is -1 in this case, right? So that is how we define order of magnitude. किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, पहले वो देखेंगे हम लोग whether it is lying between 0.5 और 5, नहीं कर रहा तो हम लोग उसको raising the power of 10 और dividing by 10, तो उसको डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करके we will bring it, इसके बीच में लेके आएंगे, और जो भी पावर 10 की रेज होगा वी कॉल इट एज ए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? सो कुछ एक यूनिट्स देख लेते हैं यहाँ पे हम, व्हाट वी कॉल, सो हियर विल सी 1 मीटर इज 10⁻³ millimeter that we all know, and 10⁻³ kilometer that we all know. 1 meter is 10⁻² centimeter. 1 meter is equal to 10⁻⁻1 decimeter, and if we have to do 1 decameter is 10 meter, 1 hectometer is 100 meter, 1 kilometer is 1000 meter. So that way मेगा हो जाएगा 10⁶, इसका अपोजिट आ जाता है माइक्रो, हेयर टेरा हो जाता है 12, हेयर इसका अपोजिट आ जाता है पिको। क्लियर? So the next topic is measurement of length. So length का measurement, there are 2 ways to measure the length. One is the direct way, another one is indirect way. So the direct way to measure the length is हमारे पास मीटर स्केल है, that will measure from 10⁻³ means 1 millimeter to 100 centimeter. This is scale we are having, meter scale. Then we are having वर्नियर कैलिपर जो कि 0.1 millimeter तक मिनिमम नाप सकता है. Then we are having screw gauge जो कि 0.01 millimeter तक हमारा नाप सकता है मिनिमम. So ये डायरेक्ट मेथड हो गए with the measuring instrument. There are certain indirect method to suppose मैं कहूँ कि give me the tell me the distance of moon from the earth.
You don't have that the measuring instrument, scale नहीं है इतना बड़ा या कोई it's not possible to measure it through some measuring instrument. So you need to apply some indirect technique to measure the distance between Earth and Moon, or to measure the distance between the planets. So there are certain indirect method that we are going to see. So first is triangulation method. Triangulation method is by the using of geometry and triangle we are doing. It's a geometric deduction. So for instance, there are two triangulation method is, one is for the accessible object, one is for the inaccessible object. Accessible object means suppose मेरे को ये एक this is a mountain, this is the length of the mountain, this is the height of the mountain AB. Okay, so you know it is you can reach that mountain. So from यहाँ से आप चल के इधर आए और आपने एक सेक्सेंट यूज़ किया and you get the angle के उसके टॉप से बॉटम तक का एंगल कितना है, ठीक है. You get this angle and you know this thing because it is accessible. तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली इसकी हाइट h इज इक्वल्स टू x tan थीटा. ओके, सो नाउ सेकेंड इज इफ दिस माउंटेन इज inaccessible, that means there is a river in between and you cannot know this distance. This distance is unknown to you and this is also unknown to you. तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, हम लोग C1 पे आएंगे, यहाँ से सेक्सेंट लगा के पहले एंगल लेंगे θ1, फिर थोड़ा दूर जाएंगे. ये हमारे को डिस्टेंस नोन है क्योंकि हमें पता है हम प्लेन लैंड पे चल रहे हैं, हमें पता है कितना डिस्टेंस है. फिर हम C1 से सेक्सेंट लगा के θ2 मेजर करेंगे, ठीक है. नाउ वी मेजर दिस, वी डू दिस tan θ1 इज इक्वल्स टू h बाई x और tan θ2 इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस d, ठीक है. नाउ वी रिमूव unknown x from here and calculate the value of h with θ1, θ2 and d. So final जो value आएगी that is h is equals to d divided by cot θ2 minus cot θ1, right? Now another most important method to measure the cosmic scale of distances is the parallax method. So it is like the fundamental method के जिसके थ्रू हम लोग the distance of sun, distance of distant planets, distance of stars जो कि up to 100 light years हैं, वहाँ तक का हम लोग parallax के थ्रू measure कर सकते हैं. So parallax is, what is parallax? Parallax is a cosmic measuring tape which will help you, which is use the fundamental of your eyes and geometry only, and it is the parallax definition is it is a apparent shift in the position of object when viewed at a two different angle. Suppose this object है, suppose एक यहाँ से आप देख रहे हैं पहले, ठीक है, ये आपको राइट साइड पे आपके लगेगा, ठीक है. फिर आप यहाँ पे आके देखने लगे इसको, ये आपको लेफ्ट साइड पे लगेगा. आपने ये यहाँ से देखना आपको लेफ्ट साइड पे लगेगा और ये राइट साइड पे, तो एक शिफ्ट हो गया ना. एक इसकी सपोज इसको बैकग्राउंड से देखो यहाँ से, ठीक है. तो यहाँ से देखेंगे ये इधर को है एंड ये I'll explain it again. So parallax basically you see it, I'll give you an illustration. Easy illustration is you take the finger in front of your eyes and you close your left eye and you see the finger with respect to the background, and then you open up your left finger and close your right finger and you see. तो इन दोनों के बीच में जो ये distance आ रहा है, जो ये apparent shift of your finger आ रहा है with respect to the background, ठीक है. ये जो apparent shift आ रहा है, ये लोकेशन ऑफ फिंगर तो वही है बट व्यूइंग एंगल दोनों का अलग हो रहा है. पहले आप इस एंगल से देख रहे हो, फिर आप इस एंगल से देख रहे हो, एंड ये जो डिफरेंस है ये आपके आइज़ के बीच का डिफरेंस है, ठीक है. और जो व्यूइंग एंगल डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पैरेलैक्स. एक और पैरेलैक्स का एग्जांपल है, जैसे कि इफ़ यू आर मूविंग इन ए ट्रेन, जब आप नियर बाय ट्रीज़ देखते हैं, ठीक है, अब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और बहुत फास्ट ट्रेन जा रही है, नियर बाय ट्रीज़ इफ़ यू सी इट मूव्स वेरी फास्ट, और बहुत दूर एक माउंटेन बना हुआ है, इट मूव्स वेरी स्लो, बहुत स्लो दिखता है. इसकी तो इनफैक्ट इसकी पोजीशन भी चेंज होती हुई नहीं दिखती, बट यहाँ से इस और जो ट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन बहुत फास्ट चेंज होती हुई दिखती हैं इफ़ यू गो ऑन द ट्रेन. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलैक्स कि जितने दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनकी अपरेंट पोजीशन आपको सेम दिखेगी, चेंज होती हुई नहीं दिखेंगी. जितने ऑब्जेक्ट पास आएंगे उसकी जैसे आप मूव करोगे उसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है. सो इस पैरेलैक्स के बेसिस पे we would be solving some problems we'll be solving the problems, we'll be measuring the distances of some farther objects with the help of geometry and parallax. So distance of moon and planet,
we use this, and the distance of nearby star, that is up to less than 100 light years, we are going to measure from this parallax. So suppose this is my Earth, and you make a measure the distance. You make a you take one this observation station 1, station A and observation station B. आप ऑब्जर्वेशन स्टेशन ए से पहले प्लैनेट को देखो, ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन से, इस एंगल से देख रहे हो आप पहले, और फिर एक बहुत दूर एक स्टार है, क्योंकि आप जब इसको यहाँ से इस एंगल से देखोगे, ये तो इतना दूर है कि आपका कोई, ये तो सेम एंगल ही बनाएगा इसका, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया ना, ट्रेन में आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखोगे, आप ट्रेन मूव करती है बट वो ऑब्जेक्ट आपको सेम पोजीशन पे दिखता है, लेकिन जो पास में ट्री है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सेम वे मैं एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन से देखूंगा ए से इस प्लैनेट को, और फिर एक मैं बहुत डिस्टेंट स्टार जो कि इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज़ मच 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 ग्रेटर, दैट इज़ अ डिस्टेंट स्टार, ठीक है। यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से 5-1 एंगल आएगा, इन दोनों इस सेक्शन के थ्रू इसको देखूंगा, और इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज़ 5-1। सेम वे डिस्टेंट स्टार को मैं डिफरेंट पोजीशन पे जाके, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन पे जाके फिर से मैं उसको मेजर करूँगा प्लैनेट को, डिस्टेंट स्टार को। डिस्टेंट स्टार ऑलमोस्ट मेरे को सेम पोजीशन पे ही मिलेगा। सो उनके दोनों के बीच का एंगल, ये जो दोनों के बीच के जो एंगल आएगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल पैरेलैक्स। सो हियर इट इज़ कमिंग दिस इज़ 5-1, दिस इज़ ऑल्सो 5-1, दिस इज़ 5-2, दिस इज़ 5-2। सो नाउ वी अप्लाई बेसिक formula, that is theta is equals to arc over radius. This will take it as a radius. This is my arc, this is my arc, and this I'll take it as a radius. This is my radius. So b over s, theta 1 plus theta 2. Now I have to find the value of s. This is my distance, so I'll take it here. So this is my final result. This base, the distance between two observation station, divided by theta 1, which I have calculated from the sextant, and the 5-1 and the 5-2. Same way I can calculate the distance of the nearby star, which is less than 100 light years. So how we will do that? Again, the same method. We have a nearby star and we have a distant star. Okay, so now we same way here for this we cannot have the two stations. We'll observe it with the rotation of Earth around the sun. So this is sun here. So at one point Earth is this point. After 6 months the Earth will go to this point B. Okay, so now I observe this from this location, and after 6 months I observe the same star with diametrically opposite location, but there is a distant star also here. There's the same star I'll observe from two distant location. So again, through the sextant I'll get my theta 1, I'll get my theta 2, and this is what we call a parallax angle with the change in position, how this star position, apparent position got changed with respect to the background. So this is my again parallax angle. So again I calculate d is my, so theta is my this distance AB, arc length divided by radius. Now I'll take it, this is my radius, so I'll calculate the value of d as AB by this theta 5-1 plus 5-2. Is it clear? So now up to 100 light years I can calculate with parallax method, but if I have to calculate for more than 100 light years then I use the intensity method. Intensity method क्या कहता है कि intensity coming from the stars is inversely proportional to is the radius. ठीक है, तो एक मैं ले लूँगा, पहले मैं कैलकुलेट कर दूँगा लेस देन 100 ईयर्स के स्टार की, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूँगा, और नाउ दिस इज़ माई इंटेंसिटी, this I calculate from the parallax method, and I have the intensity of both the star I have calculated. Now I have to calculate this star which is quite far. So this star I know the intensity but I don't know the distance. So how we calculate this? R1 is far. R1 is my far star which is greater than 100 light years, and I know the intensity of it. Okay, this is my I1. R2 is my nearby star which I calculate through the parallax. So applying this formula, I1 by I2 is inversely proportional to the radius. So I apply this formula and I calculate this R1 which is coming out to be this value, and this R2 is for the nearby star which we calculate through the parallax method.
So I hope this parallax is clear. If it's not clear, go ahead and watch the video again. Whenever you are studying the parallax, just imagine these two situations. One is observing the finger with your left eye and right eye, and with respect to the background and how the position got changed. पहले उसको पास से देखो, फिर दूर से देखो. पास से पोजीशन ज़्यादा चेंज हो रही है, दूर से कम होगी. सेकेंड इलस्ट्रेशन शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो एकदम से चेंज हो जाती है उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड. पर जो बहुत दूर एक माउंटेन होगा या सन होगा, वो देखोगे आप, वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रहेगा. ठीक है. So next we are having, we'll find out the diameter of the moon and the distance of the moon. This is quite easy. On the planet Earth, we use the sextant and we find this theta, and we from diametric opposite ends we find this angle theta, and this we apply this sin theta is equals to d over s. This is my hypotenuse, and the value of d I could able to calculate from this formula. Then the second method is to calculate the distance through the reflection method. So from the earth क्या करता हूँ ना, मैं एक लेज़र फेंकता हूँ, वो लेज़र जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती है. तो मैं क्या करता हूँ, टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ दोनों के आने जाने का. स्पीड मेरे पास है ही, बिकॉज आई एम सेंडिंग द लेज़र दैट गोज़ विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने क्या किया, 2s स्पीड ऑफ लाइट. टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया कि जब मैंने लेज़र हिट किया था और जो मेरे को रिसीव हुआ उन दोनों के बीच का, तो यहाँ से मेरा s निकल के आ गया. ठीक है. That is a reflection method, right? So ये reflection method बहुत जगह यूज़ होता है कि सपोज एक वेल है, यहाँ से आपने कुछ ड्रॉप किया, वो पहले यहाँ गया, यहाँ पे उस हिट किया और यहाँ से उसकी साउंड रिटर्न करी. तो you can measure the length of this well through this. So there are multiple ways to utilize this reflection method. Another method, this is the echo method which I have told. This is another one is the echo method where we use the speed of sound. So क्या होगा, यहाँ पे मेरे को इसका डिस्टेंस देखना है, ये माउंटेन कितना दूर है. तो I'll send some sound waves, और सेंडिंग और रिसीविंग के बीच का टाइम पीरियड मैं नोट टेस्ट करूँगा. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 2s and it travel with the velocity of speed, so v into t. So from here I calculate the value of s. Same way I'll calculate the radar. Same way there's a radar technique. radar technique के लिए सपोज एक ये मेरा सेंडिंग स्टेशन है, ये रिसीविंग स्टेशन है. यहाँ से रेडियो वेव्स में सेंड करूँगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये डिटेक्ट करेगा एंड इट विल कम बैक एज अ रिसीविंग स्टेशन. अब इन दोनों के बीच का मेरे को पता है रेडियो वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट एंड आई कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो माई टोटल ट्रैवल इज 2s, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. टाइम मेरे पास कैलकुलेटेड है, s में कैलकुलेट कर लूँगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस. दैट्स हाउ the radar has been used to detect the aeroplanes and all. Then the next is the sonar. Here I send the ultrasonic waves of frequency more than 20,000 hertz. अल्ट्रासोनिक इसलिए भेजनी पड़ती है क्योंकि वाटर में मीडियम हैवी मीडियम है, तो अगर मैं रेडियो वेव्स भेजूँगा तो इट विल गेट डिसिपेटेड सून. तो इसलिए आई नीड टू सेंड इट टू हायर फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स, सो वो डिसिपेट ना हो वाटर में, क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम है वाटर उसको ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा अपोजिट फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. सो हेयर वी हैव सेम वे, एक रिसीविंग स्टेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है. एक ट्रांसमिशन होता है, एक रिसीविंग स्टेशन होता है. ट्रांसमीटर सेंड करेगा साउंड वेव्स और वो सबमरीन से डिटेक्ट करके वापस आएगी. तो उन दोनों के बीच का अगेन आई विल मेजर द टाइम पीरियड एंड आई मेजर द डिस्टेंस through the time period and the speed of light. So for the submerged rock and the submarine I use the sonar. So right, so there are certain shadow formation के ऊपर भी कुछ एक concepts बनते हैं कि suppose ये मेरा height of tower है, पहले sun मेरा A पे था तो वो एक पहले इसकी shadow बना रहा था यहाँ पे, फिर वो
it start from here, it goes like this. So पहले वो C पे था, it make a shadow of this and it is a shadow is quite longer. जैसे वो 30 डिग्री से 45 डिग्री पे ट्रैवल किया, उसकी शेडो छोटी हो गई एंड दे में टेल यू कि शेडो इतनी छोटी हो गई. एंड देन फ्रॉम हेयर इफ़ यू मूव फ्रॉम B to A, उसका एंगल जो मूव किया दैट इज़ 60 डिग्री एंगल मूव किया, तो उसकी शेडो और छोटी हो गई, इतनी शेडो हो गई. सो ऑन दिस बेसिस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको ये दे देंगे, आपके पास एंगल है तो यू कैन मेक द इक्वेशन and you can calculate the height of the tower. So there are multiple ways they will give it to you, but the idea is कि जैसे जैसे सन ऊपर आता जाएगा उसकी शेडो छोटी होती जाएगी, और जब ये बिल्कुल वर्टिकल आ जाएगा तो उसकी शेडो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी शेडो इधर बननी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा इसकी शेडो इधर बननी, अपोजिट साइड में बननी शुरू हो जाएगी इसकी शेडो, लाइक वे. सो वही लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, 1 डिग्री इज़ पाई बाई 180 and 1 degree is 60 minutes. 1 minute is 1 minute is pi by 180 divided by 60, that is equals to 60 second, and 1 second is equals to pi by 180 divided by 60 divided by 60 further is 1 second. So this is a conversion table to convert from degree to minute to second. Right. So next we have our now we will measure the indirect distances, small indirect distances. Till now we have discussed the indirect distances for the far away objects. Now we are going to measure the indirect distances for the smaller objects. Here we use two concepts. One is one is Avogadro hypothesis, and another one is through the Oleic acid experiment. We are going to calculate the size of molecule. Here we are going to calculate the size of atom, the radius of atom. तो Avogadro hypothesis क्या कहता है कि जब भी मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स किसी वॉल्यूम, सपोज दिस इज़ माई वॉल्यूम बेस्ड वेसल, तो इसके अंदर मेरे गैस के एटम्स हैं. अब ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड, देयर्स आर ऑल स्पेरिकल, तो एक इनके बीच में ये वाला स्पेस बचेगा. ठीक है, ये स्पेस एम्प्टी रहता है. दैट्स इफ़ दे अरेंज इट इन दिस मैनर, तो ये स्पेस एम्प्टी रह जाएगा. इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है, सपोज मेरा V है, बट जो ये एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे ना, ये इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये स्पेस खाली रह जाएगा, दैट इज़ 2/3 टाइम्स ऑफ V. That is the actual volume occupied by the atoms. I'll explain once again. So जो atoms हैं, that is spherical atoms. So जब ये arrange करेंगे इस manner में, so इनके बीच में ये वाला जो space रह जाएगा, that is empty space. So अगर मैं इसका overall volume लूँ, this overall volume of this is V, and the atoms ने जो इसका overall volume occupy किया हुआ है, that is 2/3 times of V. That is what the Avogadro hypothesis. The actual volume occupied by the atoms is 2/3 times of V. Now we'll see कि मेरे पास n molecular mass की कोई गैस है. ठीक है, उसमें 1 मोलर n molecular mass में we have, अगर मेरे पास n molecular mass है, सपोज I'll take ऑक्सीजन का molecular mass हो गया 16. So 16 के अंदर we have n atoms. n atoms is 6.023 Avogadro number into 10 to the power 23. इतने ही मेरे पास उसके अंदर atoms होते हैं. ठीक है, n molecular mass of a gas is having n atoms. Now 1 gram में I take it n atoms divided by m. ठीक है, now we are having the radius of atom is r. We calculate the volume is 4/3 pi r cube for 1 atom. Now for this is, now for all the atoms will be this number, this volume of 1 atom multiply by 1 gram में कितने हमारे पास atoms हैं, n/m into this number 4/1 atom, n/m into ये जितने number of atoms है multiply by single atom का जो मेरे पास volume है, that is equals to 2/3 times of मेरा जो इसका जो वेसल का वॉल्यूम है. वेसल का वॉल्यूम क्या है, मास इज़ 1 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है. नाउ फ्रॉम हियर आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r इज m/2 pi. m is the molar mass, n is the number of atoms, density is your this density of the gas. So through this I could able to find out my radius.
Now another method, another way to find out the small distances is through the oleic acid method. Why we specifically here we are going to find out the size of molecule, and why we specifically selected oleic acid because of its large molecular size, and it's a bit soapy as a soapy solution. It's a bit soapy liquid, so that's why we use oleic acid to कैलकुलेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले एक ओलिक एसिड लेते हैं 1/1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं ओलिक एसिड का, और सपोज़ ये 20 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास एल्कोहल है. इसके अंदर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब पहले ओलिक एसिड डाल देता हूँ इस एल्कोहल में. ठीक है, अब ये सॉल्यूशन बन जाता है ओलिक एसिड का 1/20 का. ठीक है, अब इसमें से मैं फिर से इस सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें ऑलरेडी ओलिक एसिड और एल्कोहल है, अब इस सॉल्यूशन को मैं फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूँ और फिर से मैं इसे 20 सेंटीमीटर क्यूब के एल्कोहल में फिर से इस सॉल्यूशन को डालता हूँ. ठीक है, सो सेम वे पहले ऐड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर एल्कोहल. उस सॉल्यूशन का फिर से मैं इस सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड है 1/20. सो नाउ इसका भी मैं 1/1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूँ ओलिक एसिड का, फिर से उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब के एल्कोहल में डालता हूँ. तो अब जो फाइनल जो मेरा सॉल्यूशन ट्यूब है जिसके अंदर मैंने पहले सॉल्यूशन को डाला है, तो उस फाइनल सॉल्यूशन में जो मेरी ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. पहले से 120 आई और फिर दिस 120 को हैव अगेन पुट इट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल. सो दैट कम्स आउट टू बी 1/20 into 20. So that is 1/400 centimeter cube of concentration of oleic acid in my final solution. अब मैं इसमें से क्या करता हूँ ना, इन ड्रॉप ऑफ दिस कंसनट्रेशन ऑफ oleic acid लेता हूँ. ठीक है, और उसको आई जस्ट पुट इट इन दिस एल्कोहल फिल्म के ऊपर. ठीक है, इसके अंदर से आई पुट इट ऑन द दिस बीकर के अंदर एल्कोहल है, उसके अंदर मैं इन ड्रॉप्स लेता हूँ और उसको डाल देता हूँ. आई जस्ट स्ट्रेच दिस थिंग, सॉरी आई डोंट टेक इट ऑन एल्कोहल, आई टेक इट ऑन द वाटर. दिस इज़ वाटर. इसके अंदर आई टेक इट, आई पुट दिस सेकेंड सॉल्यूशन जो कि ओलिक एसिड का 1/400 है. ये मैं सेकेंड सॉल्यूशन जो है जिसके अंदर ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन 1/400 है, दिस आई पोर एंड ड्रॉप ऑफ इट इन अ ब्रॉड वेसल ऑफ वाटर. इसके अंदर आइस, जैसे ही मैं इसको पुट करता हूँ ये फिल्म बन जाती है ओलिक एसिड की. ठीक है, ऐसे एक फिल्म बन गई ओलिक एसिड की, थिन फिल्म बन गई ओलिक एसिड की, जिसकी थिकनेस T है और इसका एरिया A है. ठीक है, ये और इसके अंदर से बिकॉज इट्स इज एन एल्कोहल इट गॉट इवेपोरेटेड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. सो नाउ दिस जो मैंने एन ड्रॉप्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड डाला था वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा एरिया इंटू थिकनेस. दिस एरिया, क्योंकि ये स्प्रेड ओवर हो गया पूरा, तो दिस एरिया इंटू थिकनेस के बराबर स्प्रेड ओवर हो गया ओलिक एसिड. वो जो थिकनेस है दैट इज़ वो एक मॉलिक्यूल की थिकनेस के बराबर ऐसे ऐसे बन जाएगी ओलिक एसिड की. सो दिस थिकनेस इज जस्ट वन मॉलिक्यूल, दिस थिकनेस इज जस्ट वन मॉलिक्यूल. सो एरिया इनटू थिकनेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स विच हैव सोल्ड एंड ईच ड्रॉप का जो वॉल्यूम है V/400. दिस वे आई कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T. यहाँ पे एरिया नीचे आ जाएगा. दिस वे आई कुड एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल. Right, now we'll move on to the next one. Give me 5 seconds. So now we'll see what is mass, what is weight, and the last we'll see the time. So mass and weight. So mass is how much you are made up of, that is what we call a mass, and it is same everywhere in the universe. It is not change with कि आप planet अर्थ पे हो या planet जुपिटर पे हो, planet मार्स पे हो, स्पेस में हो, हाइट पे हो, इक्वेटर पे हो, पोल्स पे हो, everywhere you get the same mass. It is the matter inside you. It is a matter inside you that you are made up of. That is why it is constant each and everywhere. It is a fundamental property of matter. It is
same each and everywhere. And second is weight. Weight is how much gravity pulls you, how much earth gravity pulls you, how much earth is pushing you towards its center. That is kind of a force. So that is weight. So weight is different each and everywhere because we are on planet Earth, so we see कि अर्थ कितना पुश कर रहा है. If you go to some other planet तो वहाँ पे देखा जाएगा कि वो डिफरेंट प्लानट आपको कितना पुश कर रहा है. सही, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ़ यू गो ऑन मून पे जो ग्रेविटी है दैट इज़ 1/6 टाइम ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो वहाँ पे लेसर पुल मिलेगा आपको. सो दैट चेंजेस ईच एंड एवरी प्लेस. सो इवन इफ़ यू गो ऑन ए हाइट, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो चेंज हो जाएगी ग्रेविटी, हाइट पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगी ग्रेविटी. इफ़ यू गो on equator, if you go on poles तो change हो जाती है gravity. So it is not universal, it got change each and every place. It is a position dependent thing. So mass is quantity of matter. It's a measure of inertia. Inertia means कि आपको अपनी जो अभी की पोजीशन है उसको चेंज करने में कितना रेजिस्टेंस है. ठीक है. So that says the moment, that says the inertia. So for instance, if a block is there of 1 kg and another block is there of 10 kg. So if you apply the same force 1 Newton in both, so this one is having more inertia to change because the mass is more here. Mass is more, so this is having more inertia of change. Smaller mass is having, so it is having lesser inertia of change, So mass is the basic property. It cannot be zero, as I've told you, but gravity can be zero. But this mass cannot be zero. Mass is not dependent on temperature, pressure and location, but gravity is depending on the location. Now, as I've discussed, inertial mass is how much your body resists to the external force. That is inertial mass. Like for instance here, if your mass is high, so your body resists more to the external force, and but gravitational mass is how much earth pulls your body towards its center. That is a gravitational mass. Weight is the force that the body pull, and it varies from place to place, and it got zero also somewhere. Then we have I think the last topic of this lecture is time. So time, it's a very nice definition. It is measured by clock but experienced through change, motion and events. Okay. So how do you see the time? Suppose if you open your eyes and see the street, nothing moves. If it's constant for some amount of time, if nothing moves, do you think the time gets forward? If nothing moves, clock is already moving. Okay, that's a different thing. But in your experience, if you don't see any change, do you think the time got changed? So time is it's on a measuring scale it is different, but on a philosophical side it is different. So philosophical side, if you say any change only if it's happening, then only we measure the time. But through the clocks, obviously, if you stays there for a few minutes, the clock will definitely take 2 minutes. But if nothing got changed, so that means time has been stopped there. So nothing time is not being moved. So time is measured by clock but experienced through change, motion and the events. So again, the time is sequence of change. That is, we have seen if nothing is getting changed, so we could say okay, clock is moving, but on a philosophical scale time is not moving. So how do you calculate time? Any phenomena that repeat itself after an equal interval of time, that we say it, okay, this is like for instance heartbeat is there, so it repeats itself after a certain amount of time. It is periodic, so we take it as we use it as a time period. Same way the pendulum. So it's motion, periodic motion, we take it goes through one position to another position and repeat itself, so we take it as a time. And this is my atomic clock which we are using for time consideration, where it is taking the period of vibration of cesium-133 atom. And this is my atomic clock. And why we take this
vibration of cesium because it gives me with an accuracy of 1 divided by 10 to the power 13 accuracy, and it is not affected by any physical condition. This is highly accurate and it is not affected by any physical condition. That's why this atomic scale is superbly accurate. So that's why we take it. So I think this is all for the units and measurements, and this is what we have done. This is what this is all about the lecture 1 of units and measurements. So we have gone through why the units has been required, what is the purpose of measurement, why the measurement is required, how measurement is like an entry door to physics, what are the physical quantities, what are non-physical quantities which we can't measure, which is under a domain of physiology. Then we have moved down to measurement, how we could able to do the measurement, what are the kind of measurements, and to do the measurement we need some standard thing. What is that standard thing? It is called unit, and unit also has certain standards, certain condition on which the units will be defined. So those we have seen, and there are certain features of unit that should be there. So we have seen those features, and then we move down to SI system of units. We have seen some practical units for the purpose of calculations and all. We have seen large distances, we have seen smaller distances. Then we have seen the calculation of the measurement of distances, length on a direct, with the direct method and with the indirect method. And in the indirect method we have seen parallax, echo method, radar and sonar. And to measure the small distances we have gone through the Avogadro hypothesis. So this is what we have seen in the first lecture of measurement, first lecture of units and measurement. So that's all for this lecture number 1 of units and measurement. So in the next lecture, lecture number 2 of units and measurement, we will do the dimensions, why we need the dimension, and we'll do the dimensional analysis. We'll see the dimensions of different physical quantities, mechanical quantities, electrical quantities, thermal quantities. We see the dimensions of all those physical quantities. We see how we can utilize dimension analysis in physical relations. We see how the equations can be checked with the dimension analysis. We see all those things. We see the shortcomings of dimension analysis, and we will do certain questions on dimension analysis, and that will cover up the PVQ also. So in the next chapter we'll see that. So I'll meet you in the next lecture. Thank you.